I will also say to everyone to open your camera. Okay. Sorry for the delay. I forgot that Truly bhai, truly World bhai. Cup final night. I didn't get any cab or anything. It led something to else but yeah, product prioritization. Coming back to the topic quickly. Uh, did anyone frame it anything, or did you people put the pointers, any framework, anything? Would love to hear you people. Preetham working on that right now. Okay. You asked certain question, no? I missed it. I think I was getting down from the cab and all. So Gaurav has responded on that. Okay. Okay. Perfect. By the way, So you can you ask understood the two question people well, also. no? He will able to guide you better today. My question is like, what is the impact on the business? We have when we have an issue with the calling to the second user at the time of chatting. So what will how much impact will be there on that? So yeah, so let's say good question actually. So let's say if 100 people are calling, malab, if 100 people actually call, out of that, let's say 20 people call while they're chatting. Okay, they chat something, and that around 20 people call out of the 100 people. These 20 people are facing an issue. Why? Well, basically when they're clicking, this is taking some time, like let's say 5 seconds to 10 seconds. There is a lag during which the person is confused. The person is disconnecting, again trying, and so on. After 2 3 trials, this for these 23% people, after 2 3 trials they are being able to connect, but this is a friction basically. Okay. And second question is for the payment option. It is we are in which region we are launching this India. feature. For the entire thing you assume this is India, Okay. but both are very valid questions. And the AI part is there. We are integrating with a specific. We are doing with the AI. In AI, we are doing specific thing, or we are completely we are doing AI. All the features we are Oh, integrating with so AI. basically, it's already there actually. So basically, you might have seen an option Meta AI, right? So if Yeah. you them to summarize that what also sometimes it happens, right? We are in office and then there is some discussion going on in our friends group, and we don't have time to read all the messages. So I ask the Meta AI to summarize. So I assume that feature is not there, and you are as a Mm. product manager, you envisioned that such kind of feature can be built, and this is what matlab has come from business team also, that this is required. Okay. Thank you. Okay, so Pritham, I just started to put points. Going by the priority, I would first take up the AI feature that summarizes the entire chat. The second one would be getting the delay fixed. And the third one would be the payment. Now, the reason is I've used the RISE framework. That is the reach, impact, confidence, and effort. Right. Now, why I took the AI feature that summarizes the entire chat is because no need to scroll and search the entire chat. And since we are using the AI agent, it could be a quick win for us that just reads the whole chat and summarizes the chat. The user interface changes also could be a little less. So this would be a quick win if we give it a first priority. Then goes the delay in the fixing No, the no, no. delay. Let's take this one. Let's take this one. So Okay. I don't know how many people are there in the call right now. Around 7 8 people, let's say, right? Who all are aligned with this? That first is the second third sequence we'll see later. But AI one we should be building first. Who are all aligned with this? I'll come. It's good, not good. And there is no right or wrong answer. I'm telling you again. Same position, same company, two different product managers may take two different approaches. So there is no right or wrong approach. It's just that aligned with the most reasonable, being most reasonable. If that is what should drive us. So anyone else who is also aligned with WhatsApp AI, or anyone else is so here who thinks no, WhatsApp AI shouldn't be the first one, is like binary decision you have taken. I think most of you are not very keen on taking one particular stand, which
is required, to be very frank. So let's take this WhatsApp AI. So this was very nice attempt on taking a RISE approach. But let me play the devil's advocate. Okay. Matlab, let's say WhatsApp. Okay. What might be the KPIs that WhatsApp might be targeting? What might be the KPIs? Matlab, anything you do, there must be some KPI, right? You are Correct. going to office for some earning some money. You are trying to change the profile because you think that there is a better career growth, or there might be. So there should be some KPI, right? Key performance indicators. There should be some for some every product. So which KPI do you think with WhatsApp AI will be achieved the best? Which is more aligned? Maybe the user acquisition and the user retention part, like how many users get onboarded and how many users really stay on WhatsApp and try to use it more effectively. Acquisition, I think let's take both the points separately. If I take acquisition, then in terms of acquisition, I think uh, payment will be a better option, no? Because in India, already we are diverting to multiple other applications Yeah. to this No, thing. the only reason for why I did not take payment as first priority is, see, payment is something that needs more testing, more development, more testing, because uh, we Fair cannot. point. Fair point. So basically, it's low hanging fruit in a way. Correct, correct. Yeah, is more. Why it is not, I will explain you. So you agreed that in terms of purely acquisition, if I keep the effort aside, then probably Correct. payment is Yeah, more yeah. Then payment viable is the option. more, yeah. But let's take effort also. Now the complexity with Indian language, and this I am talking after talking to someone from Facebook only, Meta only. Okay. The complexity with Indian language, when you try to summarize, all the friends are talking, but all the friends or colleagues are talking, but they don't talk in a only in English language, right? They might talk in a, let's say, I am from Bengal. I might type something in English, but I am actually meaning Bengali. So then it's very tough, right? Right. So, okay, I will not take more time on this particular point. Think about it even after the call. But what I am trying to convey is you should first think that what is the KPI that any company is trying to achieve. Okay. So let's say, is it monetization? Is it user acquisition? Is it retention? Is it what exactly is the company targeting? Based on this, your priority will be also very different. How about user adoption? Might be user adoption is also one. If user adoption is your KPI, then you should first start about thinking through this product or through this feature what you are trying to achieve. Okay, so I'll tell you where does the see, entire product development is a relay race. Okay, so CEO has some vision. CEO tells the product manager that I have this vision. So product manager then thinks that in this vision, what are the features that will align me? Correct. So let's say Zomato founder is telling, Zipinder Goyal is telling in some this thing that in food delivery business, I have this vision. I have this vision that 50% of India will start ordering online. Okay. So as that is his vision. Okay. Because in other markets, US, Europe, whichever is the, let's say, target markets we look up to, those markets 50%, 30%, these are the penetrations in online ordering. So now this CEO told, now I as a product manager understood that my target is user acquisition. Then I thought that where is the main blocker? The main blocker is that the segment which has not yet been owned, or which is not yet owned by Zomato, is probably the veg segment, right? Where the veg people need specific customization. So then I created a veg segment also. Then to more customize, I created a veg delivery also. That okay, veg, there will be people who will be only delivering veg, right? It didn't get executed for different reason, but that's where the product manager thought. Now product manager will detail it out the features, then the engineering manager and the technical team will do it. Yeah, Ankur, you were saying something. My concept is like first we need to add payment option should be there Why? because uh because if you add the payment, so what are the you have a users are already there, so they can do the payment from the WhatsApp only. So you have a more customers you can add over there.
which are people using Google Pay, Phone Pay, so मतलब, they don't have to go anywhere other apps. So you have a more consumption on your system. You can increase your Very fair more. point. Very fair point. It's just that only when you think about user acquisition or user retention, this is a fair point. Now, if Yeah. I try to think about something else, let's say customer satisfaction, then probably the bug is the more important feature. No. No, bug is there because bug is only 20 people are facing issues. Not we are giving them bigger audience. We are giving this feature. Only the 20 people only facing this issue. So because that's the priority is going less for that. Okay. Because Let me play again. Yeah, let me play if again the devil's advocate for this. I agree with you that only 20% of people are facing, and anyway, 5 seconds delay only. So there will be friction and there will be. Let me be very honest with you. If it is not a very lucrative feature, no, any feature in next 2 years, you will see only 5 to 10% people only using. Not 2 years is uh, a probably a big horizon, but 6 months to 1 year. You for user adoption itself, you will take 1 year. mm. So like a bug is also like if a bug the huge people are facing this issue, then we have a priority of for fixing first issue. If 20% is a huge number, if you come to any actual this thing, I am sure you must be knowing this partially or fully. But if 20% people are facing some issue, na, the customer support team na will kill you. Okay, because they are the ones who are facing the actual customers or getting the grievance of the customers. I'm in a Mm. financial domain. Believe me, March month is going on. I was telling Gaurav the other day, this month is like killing me. Okay, because 11 months, whatever has happened, this month people try to achieve like 25 to 30% of their target this month itself. Okay, so now any bug coming to even let's say, well, forget about 20%. Even if 5% people face one particular bug, customer support team is going to kill me. I'm not being able to enter office. That is the truth. But keeping the joke aside, I am just trying to convey you that start from a KPI. Whenever you are doing the prioritization, na, start from a KPI that what are you trying to achieve. If you understand that what you are trying to achieve, it's much easier for you to convey that which metric you are targeting and why. Because that metric, each metric has a different set of goals to achieve. Okay, that is my humble this thing. मतलब conveying message. Any मतलब this particular case probably you can again, yeah, Rucha, you were asking something. No, I mean, you were saying decide the KPI first, but then every single feature and every single product has their own, कैसे बोलो मतलब उनका रिक्वायरमेंट ही अलग रहता है. तो मैं हर एक प्रोडक्ट या फीचर के लिए सेम केपीआईज तो नहीं रख सकती, राइट? So तो I'll answer माय this. क्वेश्चन So कम्स डाउन टू द बॉटम कि मैं केपीआई कैसे डिसाइड करूंगी फिर इस केस में. केपीआई एक्चुअली आप डिसाइड करते भी नहीं हो. मैं आपको बताऊं, केपीआई एक्चुअली ऊपर से डिसाइड होकर आता है. दैट इज व्हाट बोर्ड डिसाइड्स. सो अगर मैं जो कंपनी जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में होगा ना, फॉर एन अर्ली एज स्टार्टअप probably user acquisition is the most important thing. You might not go for user satisfaction that much as ICICI Bank or let's say a tell me Sunny Microsoft will go for it. बिकॉज वहां पे एक छोटा सा कुछ भी इधर उधर हुआ ना, आप एक चीज सोचो, गूगल सर्च में कभी कभी ऐसा न्यूज में आता है ना कि ऐसा साइंस सर्च किया कि लेट्स से मतलब रैंडम एग्जांपल, बट जस्ट यू विल बी अंडरस्टैंड एबल टू अंडरस्टैंड. आपने ऐसा शेयर हु इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड एंड समहाउ लेट्स से नाम आ गया नरेंद्र मोदी. ठीक है, इट विल बी अ बिग कंट्रोवर्सी. ठीक है, इट माइट बी मैचिंग द एल्गोरिदम्स एंड एवरीथिंग, बट गूगल का तो पूरा मार्केट चला जाएगा ना भाई. आधे लोग तो ब्लॉक कर देंगे, मतलब अनइंस्टॉल कर देंगे. You understood my point. So for such a big organization, their customer acquisition is secondary. Customer जो accuracy of the thing है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे चैट जीपीटी में भी आता रहता है ना कि चैट जीपीटी, अभी एक जोक चल रहा था ना कि एआई से मैंने पूछा कि देयर इज अ पेट्रोल पंप. आई डोंट नो यू पीपल हर्ड दिस जोक दिस और नॉट, बट मेरे को कार वॉशिंग करवाना है तो 200 मीटर दूर है. शुड आई वॉक और शुड आई टेक माई कार? सो एआई आंसर्ड दैट यू शुड वॉक, right? And it became a very booming news that okay, AI didn't even learn this. So understand this thing कि जब आप उस लाइन पे पहुंच चुके हो ना, चैट जीपीटी इस लेवल पे पहुंच चुका है, जेमिनी उस लेवल पे कि वो यू एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी. 1.0001% गलती भी ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा.
लेकिन वही Hmm. चैट जीपीटी जो 2021 में था, वो अगर 20% भी गलत देता ना, उसका वो पर्पस था ही नहीं, उसका था मंथ ऑन मंथ एक्विजिशन करना. पीपल वर रिसेप्टेबल टू द फैक्ट कि दे विल मेक मिस्टेक्स. Understood. फैक्ट है ना. तो वो ऊपर से बन के आता है, वो बिजनेस, मतलब वो बोर्ड से, ये सीईओ से बन के आता है कि अभी हमारा टारगेट है यूजर एक्विजिशन, अभी हमारा टारगेट है मार्केट स्टेबल करना, अभी हमारा टारगेट है मोनिटाइजेशन, कि हम लोगों ने बहुत एक्वायर कर लिया, अब मोनिटाइज करो इसको. आपने भी देखा होगा कि अन अकेडमी एंड ऑल अर्लियर यूज टू बी लाइक कि कैसे भी एक्वायर करो, फिर एक्वायर करने के बाद आया कि नहीं मोनिटाइज करना है, अभी अभी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, है ना. Hmm. वो चीजें कि कौन से स्टेज पे कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. हमारा काम है उस केपीआई को अचीव करने के लिए क्या फीचर्स आप लॉन्च कर सकते हो, है ना. So this is what. So this is on side of product prioritization. Now in for this particular question, if you have anything, you can always mail me, connect with me on call or WhatsApp. I'm happy to connect. There is no problem. But let's take the second topic or this thing. So let's say, Pritam, just give me a second. I just want to say one thing. yeah, please. I will tell you one thing. Okay. When you are attending these kinds of sessions, always create your notes and share it out LinkedIn and tag Pritam as well. I will tell you why I'm saying it. Iman, there are around 10-15 people into this call. At least एक ही बंदा करने वाला है, एक या दो बंदा. Literally no one is going to post. I will tell you why. When you're going to post one simple thing, Pritam will 100% remember. There are other people that are also going to come. When you are going to post, those people will love to connect you. Later on, they will give you referrals as well. And I will tell you one very important thing. हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, very interesting. I literally don't know Pritam. मैं नहीं जानता था प्रीतम को. There is a guy in Prabhat. I posted. Prabhat just reposted my post. प्रीतम सीन, मेरा नंबर इंटरनेट पे अवेलेबल था. प्रीतम मैसेज मी इन द नाइट कि आई लव टू टीच बिकॉज ये कम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ टीचिंग एज वेल. ठीक है, ही वाज प्रीतम, यू आर अ मैथ टीचर ना, आई Yeah, थिंक. yeah. In time, I used to teach. So for CAT and everything, I have taught like a good amount of time. So Time and that hours. he reached out to me, and then after that in every single 3 months. And I will tell you one very important thing. Preetham is also one of our alumni as well. He has learned whole course content. Take care from us here. This is the stuff. He has also done the Hmm. whole program, okay, which you guys do. But there is a one thing, I have not trained him. Other people have trained him. Students are connected with him personally and train him. Okay, yeah. Take so create your notes, create a post as well about it. We to 100% going to sure, we are 100% sure we will post it. Okay, but I will recommend you to write your notes and do it. This will help you building your personal brand. There is a simple way. When you tag someone, your authority will get increased and इधर उस बंदे की ऑडियंस मिल जाती है. ठीक है, that's how things look like. Yes, Pritam, you can continue. यार. So on that note, thanks to Sasank and Siddharth. Siddharth has taken like 3 or 4 sessions, and Sasank has taken 1 session, and those have been very helpful in terms of AI, learning AI. And one thing I have understood that you should keep learning. Okay, but from this discussion only, one thing came in my mind, due to which I'm little bit distracting from core product thing, but very important for you to understand. So if I ask you to define a brand, how will you define a brand? Like, what is a brand? Keep calling, right? That, अरे ये तो बड़ा brand है, ठीक है? Let's say anything. Dove is a big brand. Okay. So when I say it is a big brand, it is a small brand. How do you define? Anyone can answer. A brand is a big name. But how do you define a big name? Quality, Quality. Okay. Uh, Quality Market. and quality and insurance. So, approachable, मतलब good points. So WhatsApp is a big brand name. वो उसका application का नाम क्या है? आता रही ना, जो इसका नाम है आरातई. जोहो का एक है ना मैसेजिंग ऐप, श्रीधर बाबू Atri, आराताई Atri, 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 Atri. अतरई. हाँ. नहीं, it's not Atri, it's Aratai. Aratai ना, हाँ Aratai. Atri So is this one. now I used Aratai for like let's say 2 weeks. Okay.
It's just that people were not coming to that platform, so that's why. So when I used it, no, I felt it's much better in many senses. Okay, but WhatsApp is a bigger brand name. So if quality is driving everything, why WhatsApp is a bigger brand name? Or I can take different examples in from different things Publicity. also. You might have also seen, let's say, what I should say. Uh, hmm? Maybe marketing or publicity of that particular brand. Marketing. But what is a brand? Like, well, Yeah, good answers. that Quality makes is you definitely an answer. that But makes your impression this is good. For example, now at some point of time, Lifebuoy was a brand for India, right? But then when you started getting into it, मुझे तो याद है बचपन में हर एक के घर में almost Lifebuoy या Lux था. But then when you started doing it, तभी marketing वैसी थी, इसीलिए that goes into your mind that this is good, this is good, this is good, and sooner or later you realize this is not the good, or maybe it is still there. So I feel it's a marketing and publicity gimmick which creates that name in your brain. And It is a logo. It is a logo of the brand. Like you, what logo logo creates you, the identity of the brand. Let's say no, if my name is which Pritam. which logo you remember, it is a brand for you. Okay. Like which, Yeah, I think it's the reach. When if you're trying to reach large people, and it converts into a brand. First of In all, my it's a free app. When it was given to the customers, it is a free app. Most of the people will be approached with that only, like, you can use it for free. First thing. That is the reason they were able to install it. Once, if you have to pay something, people will be thinking. But if this is something that is coming for free and they have a publicity and they also have this, like, they have incorporated their apps into the mobiles already while you buy it. There is no need of searching for you again and get that installed. ठीक So है. that's already Fair there. point. So, trust. all are right answers only. Matlab, there is no wrong answer. So the way I define brand, no, I wanted to share this with you because I think in a product is very closely associated with marketing also. I'll tell you, I'll explain you why. And if you understand that the branding is very core of marketing concepts. If you understand this, then probably you will be able to relate many things in product. So how I define or how many from many experiences or many teachers I have understood what is a brand for which you are either ready to pay extra or you are ready to wait extra. So ready to pay extra meaning so आपके पास गाड़ी है आप बहुत खुश अपने टोयोटा से लेकिन आपको you are ready to pay extra to get a Mercedes. So Mercedes is a bigger brand. As simple as it is. Okay. मैं एक मैच में ईशान किशन खेल रहा है एक दूसरे मैच में विराट कोहली खेल रहा है या स्टैंड अप कॉमेडियन लेट्स से स्टैंड अप कॉमेडियन एक स्टैंड अप कॉमेडियन आया मैं 600 रुपए देने के लिए रेडी हूँ और एक स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहा है मैं 2000 रुपए देने के लिए रेडी हूँ तो 2000 रुपए देने के लिए जिसके लिए रेडी हूँ ही इज अ बिगर ब्रांड ही मस्ट बी ए बिगर ब्रांड सो रेडी टू पे एक्स्ट्रा रेडी टू वेट एक्स्ट्रा मीनिंग आप दुकान में गए आपने अभी लेट्स से सर्फ एक्सेल आपने सर्फ एक्सेल मांगा तो दुकानदार ने बोला नहीं है आपने वो उसने बोला सर्फ एक्सेल तो नहीं है टाइड लेके जाओ मस्त है आपने ले लिया तो सर्फ एक्सेल इज नॉट अ बिग ब्रांड लेकिन आपने बोला नहीं ठीक है कल आता हूँ लेकिन सर्फ एक्सेल ही लेके जाऊंगा तो सर्फ एक्सेल इज अ बिग ब्रांड that's how I feel it's a bigger thing. There might be many free products, but think about it. How many of those free products actually will be used if you people are asked to pay for this? And even after that, will you be able to call it a big brand if you are having to pay for that? Happy to counter, happy for counter argument also. Matlab, there is no harm in countering this. No, the brand, how the brand will come. So like you're telling that we are ready to pay. Before that pay should be the brand should be developed on that level. Then you are ready to pay for that. So how the brand is built is another part. Matlab, that itself is a like let's say uh, 5-6 hours discussion. But if I'm Anyway, saying I love to hear how to build a brand, by the way, after this. these are very interesting discussions actually. But even if someone says that okay, I have built a brand and this is a good brand, then how will you quantify or how will you justify that okay, this is a big brand? Oh, no. I think amount of goodwill is depending the factor. Matlab,
ठीक है, मतलब गुडविल को ही अभी मैं क्वांटिटेटिवली या जस्टिफाइबली रिप्रेजेंट करने चाहूँ तो उसी के लिए मैं इधर यूजर को बोलूंगा भाई पे करो, पैसा दो, या फिर तुम वेट करो, मतलब वेटिंग टाइम बना दूंगा कि हाँ भाई इतना वेट करना पड़ेगा। सो दुर्गा For, पूजा इज फेस्टिवल इन for बंगाल। goodwill, I agree because there is one brand in Pune called, I mean, if somebody is from Pune can relate, it's a Chitra, and they are very famous for their bakarwadi and mango barfi. So, with just a brand name, they have sold it long time ago to some Marwadi fellow. That family's taken over the business, but just because of the brand, he earns lakhs a day. मोर लाइक हल्दीराम स्टोरी ओनली, मतलब हल्दीराम, Yeah. हल्दीराम या बीकानेर दोनों ही एक्चुअली ऐसे ही मोटा मोटा शॉप से चालू हुआ, एंड देन वर्ड ऑफ माउथ एंड एवरीथिंग। बट वन थिंग दैट आई डिसएग्री विथ यू रुचा स्पेसिफिकली इज दैट इट इज नॉट मार्केटिंग गिमिक एक्चुअली। सो गिमिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट पार्ट, but brand is also built on like long term consistent performance also. Like let's say Ola scooty nahi chala na, मतलब नहीं चला means it lost the market, it's now in the number 5 where it used to be distant market one, मतलब सेकंड से काफी आगे था, बिकॉज कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाया ना। लेकिन देर आर मेनी अदर ब्रांड्स लाइक यू एक्सपेक्ट सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी व्हेन यू गो फॉर ए सर्टेन ब्रांड, राइट। सो वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट, मतलब गिमिक से आप एक क्वार्टर दो क्वार्टर तक खींच सकते हो, Hmm. बट उसके बाद ना उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना वो रुक जाएगा। है ना। so that is one part. So brand this thing. Now why I'm coming to this thing product, why I'm coming to this brand discussion in product. So one of the challenges that I face, and I'm happy to take suggestions also in later also. So one of the challenges that we face, no, so any product you build or any feature you build na, the toughest part is to explain it to the user and get the user adapting it. Okay, the toughest part is this. Okay, so believe me, product management is like cooking. Okay, आप कुक कर लेते हो, बहुत इधर उधर से मसाला वसाला ला के एकदम अपने प्यार से खाना बनाते हो, फिर अगर खान मतलब जो खाने वाला है उसने अगर खाया नहीं ना, तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद। सो ऐसा बहुत होता है, मतलब आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, 10 में से 9 प्रोडक्ट मतलब कोई याद भी नहीं रखता कि ये था। Hmm. सिर्फ एक प्रोडक्ट 10% मैक्सिमम काम में आता है, और वो 10% पे ही पूरा दुनिया जज करती है। इवन बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस फेल ऑन प्रोडक्ट, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, राइट। वेरी कैंडिडली, वेरी ऑनेस्टली, आप अगर गूगल का भी पूरा अल्फाबेट का पूरा गूगल का पूरा अगर एप्लीकेशन देखोगे ना, तो उसका आधा चीज खरीदा हुआ है, एक भी उसका बहुत ही कम खुद का चीज है जो सक्सेसफुल है। गूगल प्रोडक्ट। यूट्यूब खरीदा हुआ है, ठीक है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू टेक, नो इट्स एमजी, लाइक Orkut, एमजी। they tried, they couldn't succeed. ठीक है, so I am not demeaning their stature. They are like 100 times more brilliant than me. But the practical world runs like this. That आप जो 10 फीचर बनाओगे ना, उसमें से 9 पूरा फेल करेगा। नाउ एडप्ट करवाना पड़ेगा यूजर को। अब एडप्ट करवाने के लिए ना आपको कुछ तो एक ब्रांडिंग क्रिएट करना पड़ेगा, विच आई थिंक एलन मस्क डज वेरी वेल। वो छोटा सा भी कुछ करता है ना, तो एकदम इतना, मतलब इतना ज्यादा ब्रांडिंग क्रिएट, मतलब इतना ज्यादा न्यूज क्रिएट कर देता है, कंटेंट क्रिएट कर देता है कि इट फील्स लाइक कि इफ आई डोंट डू दिस आई विल मिस इट आउट, राइट। एक फोमो क्रिएट कर देता है यूजर्स के मन में इवन। लाइक एमजी। हाँ, दिस इज लाइक ए, एमजी, एमजी मोटर्स। हाँ एमजी मोटर्स, करेक्ट, एमजी मोटर्स डज द सिमिलर थिंग। क्योंकि उसका एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट फेल आउट होगा। क्या क्या क्या। उसका एक टाइम पे ही एक प्रोडक्ट चलता है। ओके। पहले लोग एस्टर था, हेक्टर था, हेक्टर के बाद एम जी जेड चला था। अब विंडसर है सिर्फ। लोग विंडसर के पीछे भागते हैं, बाकी ट्रू, गाड़ियां कोई नहीं पूछता। वेरी ट्रू। सो सो यू आर राइट, सो एग्जैक्टली, सो दिस इज हाउ, मतलब वो जो प्रोडक्ट एडॉप्शन करवाना ना इज द नेक्स्ट चैलेंज। नाउ विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, because I only delayed, I was only late, and I am again apologizing for this. It was out of my hand, otherwise I wouldn't have been. But अगर मान लो आप कोई एक एप्लीकेशन लेते हैं लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन में आपने एक फीचर बनाया चैट में, जिसमें होता है ना कि बहुत सारे लोग, मतलब आपको बहुत सारे जगह पे किसी एचआर को देखा या किसी को ने उसको पिंग किया कि ये जॉब में मुझे अप्लाई करना है एंड एवरीथिंग। सो लिंक्डइन लेट्स से ऑटोमेटिकली मेक्स अ फीचर फॉर दिस। ओके, कि जो जॉब हंटर होगा उसका ऑटोमेटिक 10 जहाँ पे अप्लाई करना है वहां पे अप्लाई हो जाएगा, और मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन देना होगा दैट यू कैन थिंक ऑफ, बट अप्लाई हो जाएगा। और जो
सीनियर लेवल पे है, जो जॉब मतलब रिक्रूट कर रहे हैं, उसके पास समराइजली 10 प्रोफाइल दे दे के शुरू में आ जाएगा. Now you have to get it adopted. Okay, how will you go about it? Is the question clear? अगर नहीं है तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ना एक चीज मैंने फंडामेंटल सीख लिया. जो आप बोल रहे हो ना, वो चाइनीज विस्पर नहीं होना चाहिए. कि मैंने जो बोला वो सामने वाले को जो समझा. चाइनीज विस्पर किसने खेला है? हम्म. क्या ही होगा. ठीक है. Yes, yes. यूजफुल टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो. ठीक है. सो चाइनीज विस्पर में क्या होता है ना, कि सीईओ ने प्रोडक्ट को कुछ बोला, प्रोडक्ट कुछ समझा, उसने इंजीनियरिंग मैनेजर को कुछ बोला, इंजीनियरिंग मैनेजर ने टीम लीड को कुछ और बोला, टीम लीड ने जो डेवलपर को कुछ और बोला, डेवलपर ने क्यूए को कुछ समझा दिया कि ये ऐसे ही होता है. फिर जो बनना था और जो बना, दोनों में वो कुछ और 10 साल का बनेगा. डिफरेंस हो जाता है. तो वो प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि वो चाइनीज विस्पर ना हो, जैसा बनना था एकदम वैसा ही बने. बनना था कबूतर, बन गया गधा. हाँ एग्जैक्टली. अब उसको उड़ने का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो वो तो नहीं हो पाएगा वो दोस्त. तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, हाउ विल यू गेट इट अडॉप्टेड? क्या करें हम लोग कि उनको पता चल जाए कि अरे ये तो मस्त फीचर है, ये तो मेरा टाइम बचाएगा, मेरा फ्रिक्शन भी कम कर देगा. क्या करेंगे हम? I mean, like we need to like casting. I mean, whenever the user opens it, they'll get to know that they will be notified that this is some feature which is available in the LinkedIn, which can be used by the people, which will help you to integrate your resume into the application, and it will help you to submit it. We need to make sure that it's like a pop-up kind, or already the existing users can get up an email or a notification on their mobile itself like that. ठीक है, फेयर पॉइंट. वन इज दिस. सो विल शो ए पॉपअप uh, दैट दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ड. दैट आपका रिज्यूमे, आप इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन दे दो, आपका 10 लोगों पे रिज्यूमे ऑटोमेटिक चला जाएगा. समथिंग लाइक दिस, राइट? Mhm. or you can share like you make a small video how this and send it to all the users by email, notify to the users. Here we can make a video and send it. What else? Or whenever the user log in on the LinkedIn, from there we can showcase small pop-up over there how this feature is working. Correct. So Sam was, I think, was mentioning the same thing, Ankur. So yeah, so two things we got. One is pop-up to show that okay, we have built this and this is how it will function. And second thing is making the video, tutorial video kind of thing. Now let's me play the devil's advocate, ठीक है, and the frustrating part of the product management. आपने वो pop-up build कर दिया, but next 5 days you are tracking, right? 5 days में आपने देखा कि ऑलमोस्ट आपने 10,000 लोगों को पॉपअप दिखाया, और अप्रोक्सीमेटली 10 लोगों ने सिर्फ वो खोल के देखा, बाकी सबने क्रॉस करके आगे बढ़ गए. तो उसको पता ही, उसने समझा ही, मतलब समझ में होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ खोलते हैं और हम लोग जस्ट डायरेक्टली क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है. हो भी तो सकता है ना. Yeah, yeah. नहीं, अगर मैंडेटरी कर दो कि वीडियो देखना ही देखना है उसको. Okay, क्रॉस that's an क्रॉस ना. interesting point, but do you think that is the right way? मतलब won't you get irritated कि अरे साला ये तो मैं एक ऐप खोल रहा फर्स्ट हूँ. टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम अगर अगर आपने फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन देख रहे हो तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम. इट्स ए मैंडेटरी लाइक अपडेट और मैंने लाइक. LinkedIn ऐप ही बंद कर दिया, वो देख के साला मेरे पास We अभी टाइम. can give some subscription kind of thing. Subscription kind of thing. Like you already have a premium subscription. With that, this is some add-on feature which can be used. So the existing customers at least can use, and that will be populated, and that will be like it will become a new feature of the LinkedIn, which will go So, throughout the so people. सो या, सो वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. सो मैं जो पॉइंट पे आना चाहता था ना, लाइक इट इज मोर अलाइन टू दिस. आपको कभी भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करोगे ना, तो आप होल सेट के साथ कभी भी एक साथ लॉन्च मत करना. करोगे ना कुछ बैकफायर करेगा. आपको कोई एक नीश सेगमेंट ढूंढना है, किसके Hmm. लिए लॉन्च करना है. उस नीश सेगमेंट पे पहले एक्सपेरिमेंट कर लो, बग फिक्स कर लो, फिर जाके पूरे ऑडियंस के लिए लॉन्च करना. मेरा सजेशन ये है. ऑब्वियसली यू माइट हैव डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर, ठीक है. सो like you said, premium users, you might have mentioned in a different way, but let's say 100 में से
दो तीन ही होते होंगे प्रीमियम यूजर, आपने Correct. उसके लिए लॉन्च कर दिया। अब प्रीमियम यूजर जो है वो तो पैसा खर्च चुका है, उसको तो चाहिए कि लिंक्डइन से मैं कितना वैल्यू ढूंढ पाऊं, या फिर उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी मेरे पास जॉब एप्लीकेशन आए या जल्दी से जल्दी मुझे जॉब कहीं पे मिल जाए। तो वो प्रीमियम यूजर के लिए आप अगर दोगे तो वो शायद एडप्शन ज्यादा होगा। Now, for a particular region, probably due or for a particular festival, you can say this premium feature I am launching to this zone or this for these 3 days to normal users also. Correct. Then you are creating a क्या बोलूं मतलब यूजर को पुश करने की जगह यू आर पुलिंग द यूजर के अगर आपने यूज नहीं किया 3 दिन में, देन यू सी द रिएक्शन। देयर माइट बी मेनी ड्रॉप्स। सो प्रोडक्ट में प्रोबेबली आज अगर टाइम रहता तो मैं फनलिंग भी बात करता, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम इज द फनल, कि यहाँ पे 100 लोग आए, फिर नेक्स्ट स्टेप में 50 लोग गए, फिर नेक्स्ट स्टेप में 20 लोग। सो पहले जो 100 लोग ड्रॉप हो रहे थे शायद क्योंकि मैं जेनरिक पॉपअप दिखा रहा था, एंड आई कांट जस्टिफाई दिस, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू शो द पॉपअप फ्रॉम द इन द बिगिनिंग ओनली। एंड मतलब क्योंकि वो यूजर ने एक एक्सपेक्ट कर रहा है सर्टेन थिंग, तो आपने Correct. कॉर्नर में कहीं पे छोटा सा चेंज किया है, वो करके अगर आप चेंज लाओगे तो ठीक है, नहीं तो बड़ा सा कुछ चेंज अचानक ला दोगे ना तो वो इरिटेट हो जाता है मैक्सिमम टाइम यूजर। ठीक है, तो और जनरली वी ऑल आर वेरी क्लोज कॉम्पिटिटर्स। मतलब लिंक्डइन तो चलो एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ जिसका ऑलमोस्ट क्या बोलूँ मतलब मोनोपोली है, मतलब सोशल नेटवर्किंग ऑफ द प्रोफेशनल पीपल में। बट अदरवाइज जैसे अगर मैं जोमेटो स्विगी हूँ और जोमेटो में मैंने खोला और मुझे एक पॉपअप दिखा है जिसपे मुझे देखना ही है या फिर नहीं भी देखना है, पॉपअप खुल रहा है बार बार, मैं प्रोबेबली स्विगी में चला जाऊंगा, खाना ऑर्डर कर लूंगा तब तक ये सब होते होते। ठीक है, या ब्लिंकिट ये सब करूंगा। तो कोई इतना आगे कोई पीछे नहीं होता। लिंक्डइन इज अ बैड एग्जांपल फॉर दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट showing a pop-up is probably will create more friction. It might create more harm than doing good. So what I'm trying to convey is target a niche segment. Whenever you are doing this thing, target a niche segment, launch for them, experiment with them, then you try to launch it to the internal मतलब external world, मतलब all the people. Correct. Example, Apple always ask you to register for early users, कि अर्ली यूजर के लिए ये वो एक होता है ना, कोई फीचर लॉन्च करते हैं तो पहले रजिस्टर करना पड़ता है कि इसका बीटा बीटा ऑप्शन। बीटा बीटा करेक्ट, हाँ बीटा वाला। तो वो टाइप होना चाहिए। तो एडॉप्शन, तो दो चीज हम लोगों ने आज बात किया, एक है प्रायोरिटाइजेशन और एक है एडॉप्शन। कुछ भी समझा या फिर इट्स ऑल गोइंग ब्लैंक एंड इट्स लाइक लुकिंग लाइक रैंडम थिंग्स? No, it's good. कूल। क्योंकि देखो अगर समझ में नहीं आया ना तो पूछो, बिकॉज प्रोडक्ट एक ऐसा चीज है ना, इट्स काइंड ऑफ ए मिक्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, सो यू हैव टू डू ए ब्यूटीफुल पिक्चर बट विथ सर्टेन नंबर्स। ओके, दिस आर द numbers due to which I am drawing the picture like this. पिक्चर तो बना दी, वो कितने में बेचनी है? हाँ वो बेचनी भी है। Pritam, I have a question. If you Yeah, please go ahead. So, Pritam, I was just, I mean, this may not be related to the mainstream questions asked here. But I have a question that's it. I mean, I was just going through your profile, and I understand that. I mean, you have passed out from the best of B schools, and you have worked into finance and all of that. But then I see you have worked with series of startups. So just trying to understand. See, I understand product manager is more about product building and all of that. But I mean, what are the core differences you feel as an product manager and also as an individual to work in an established MNC or to work in a startup which is trying to thrive in a market? वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो होता क्या था ना, मैं एकदम ऑनेस्ट आंसर दूंगा, सो डोंट कोट मी इन सम टू सम सीनियर पीपल इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक में वहां पे ना सिर्फ केपीआई डिफाइन होकर नहीं आता था, वहां पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही डिफाइन होकर आ जाता था कि ये ऐसे ऐसे ही बनना है, एंड आई वाज ऑन द लेट एग्जीक्यूशन साइड ऑफ इट। ठीक है, क्या आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, अब ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये आपको एग्जीक्यूट करना है। स्टार्टअप में क्या है ना, स्टार्टअप में सीईओ ने बस बोल दिया इतना, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग ना, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसमें सप्लाई चेन फाइनेंस है। सप्लाई चेन फाइनेंस इज मोर लाइक ए व्हाट आई शुड से, मतलब लोन्स में ना, बहुत क्रिस्पली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो टाइप के लोन होते हैं, एक है वर्किंग कैपिटल और एक होता है टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, आपने पैसा लिया, सिर्फ इंटरेस्ट चुकाते रहो,
जब आपको पूरा मूलधन चुकाना हो आप चुका दो, ठीक है। और टर्म लोन इज मोर लाइक ए ईएमआई काइंड ऑफ थिंग विच वी जनरली सी इन पर्सनल लोन्स, राइट, जहाँ पे आपने घर लिया लेकिन आप हर मंथली इंस्टॉलमेंट सर्व कर रहे हो एटसेट्रा। सप्लाई चेन फाइनेंस इज मोर लाइक ए वर्किंग कैपिटल। आपने पैसा ले लिया, 10 लाख रुपए उठा लिया, आप हर साल उसका हर महीना उसका इंटरेस्ट ब्याज भरते रहो, और फिर आप 5 साल बाद आपको लगे कि नहीं आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैंने 10 लाख रुपए वापस दे दिया, यू आर गुड, कूल, अंडरस्टूड द डिफरेंस। We Right. were always working on the working capital. We were never working on the term loan in our organization. Very frankly, मेरा सीईओ मेरे को बोलेगा तुम्हें टर्म लोन बनाना है। अब वो टर्म लोन का क्या फीचर होगा, उसमें प्रीपेमेंट अलाउड है कि नहीं, उसमें पार्ट पेमेंट अलाउड है कि नहीं, उसमें कुछ चार्जेस लेना है कि नहीं, ये सब मुझे सोचना है ऑन ग्राउंड जाके बिजनेस टीम से बात करके। दैट इज द वैल्यू ऑफ ए स्टार्टअप। अगर वो आईसीआईसीआई बैंक होता तो इतना तो छोड़ ही दो, वो टर्म लोन का पूरा स्ट्रक्चर बन के आता, उस स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, कौन सा मैसेज जाएगा, सब कुछ लिख के आता। आई वुड हैव वर्कड स्टिल ऑन ए लेट स्टेज एग्जीक्यूशन पार्ट। डिड आई कुड आई Yeah, कन्वे? yeah, yeah, absolutely, absolutely, sir. I mean, your question was very, I mean, pretty straightforward. But, sir, I mean, this is like, what do I say, sir? It's a mainstream answer. But my question is, sir, does it end of the day depend on I mean, individual's prowess to think on this part, or do you feel that as a product manager, you should have that sense of thinking and sense of building, or else you're simply, I mean, you're not doing the right thing being a product manager. Do you see this, sir? इंडिविजुअल के ऊपर तो देखो डिपेंड करेगा ही, लेकिन पॉइंट ये है ना कि वी मोस्ट ऑफ द टाइम, वी मीन्स एवरी वन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, वी ट्राई टू ओवर एस्टिमेट आवर सेल्स। मैंने मुझे ना फाइनेंशियल आईसीआईसीआई बैंक में मैं जब गया तब मुझे पहली बार साला देखा कि मतलब स्टेटमेंट ऐसा होता है, लोन में इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होता है। उससे पहले तो मुझे लगा कि मुझे तो लोन आता है, मुझे समझ में आता है। फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक गया, मेरा दिमाग मतलब खुल गया कि इतना कुछ होता है, इतना कंप्लायंस कंप्लाई करना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ as an individual, I might be confident that I will be able to get it done. But actually, I will be able to get it done or not, that ICICI will never be able, in ICICI, I will never be able to put myself into the test. But in a startup, you will be able to put yourself into the test. Right, sir. Right. Individually, I am Right, sir. confident that I'm coming from a certain background. I am confident. I can go and talk to the customer. I can get it solved. I can get things done, etc., etc. But actually, I will be able to get it done or not. That मतलब थोड़ा सा क्या बताओ, आज वर्ल्ड का फाइनल चल रहा है ना, मतलब सब प्लेयर्स को लगता है ना कि वो अगर खेलता तो ऐसा 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 कर लेता, लेकिन वो कर पाएगा कि नहीं ना, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जो एक्चुअल Right, खेल sir. रहा है ना वो उसको खेलने का मौका मिल रहा है। दैट आई थिंक इन स्टार्टअप यू गेट वेरी अर्ली। इन एन आईसीआईसीआई बैंक probably I would have done this in the 2035 or something like that. Sir, and last question to finish off, sir. I'm Uh-huh. sorry for other participants who are taking time. No, I Sir, think how very do valid you for view, everyone. sir, and more, sir, I mean, I see, sir, close to a decade you have been in product. So, sir, how do you view the AI bubble that's going on? And there's a new role that has emerged, and I mean, there's a sense of urgency that in every second profile you see has labeled as an AI product manager. I mean, when you go deep dive, you see that they are doing the traditional product manager, but again, is a challenging profile to be in. So, what's your view about AI product manager as a title and as a job? And second thing is about AI bubble. Do you consider it a bubble, or do you see it's here to stay and it would impact the daily work of us, or also in the long term? In terms of a product manager's designation. Yes. Okay, very valid question. For a single minute, I'll come back to this, but for a single minute, let me keep aside the AI part. What value does the product manager build on the bring on the table? And everyone has to answer because you are attending a product management session, so you should be well versed with understanding that क्या product manager क्या value लाता है on the table. Some there must be some value, right? A salesperson जाके sell करता है, marketing person create the brand so that customer gets to know about it, compliance person ensures कि मेरे को कोई चेज ना कर रहा हो बाहर, कस्टमर सपोर्ट कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर। तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या कर रहा है? कुछ तो कर रहा होगा प्रोडक्ट मैनेजर, Adding the business value. तो बिजनेस कर लेगा, वो तो No, बिजनेस डायरेक्ट कर सकता है, प्रोडक्ट मैनेजर को क्या जरूरत है? I think product manager Wha- owns the product, sir. When I say owns the product, I think he is responsible for the born. I mean, the birth and the depth of the product is, I believe. So, I mean, he basically manages everything on a very superficial level and makes makes decisions where you keep the product alive, you accelerate the product,
or you downtime the product for some time so that the market is not good. And basically, you take key decisions with respect to product. Basically, you own the product, is what I feel. So, The key decision is one part, which is this thing. But why does that product exist in the first place? He I will be mean, like designing, he will be maintaining the backlog, sprint movement, everything. He is प्रोडक्ट like, मैनेजर कर लेगा, प्रोडक्ट मैनेजर क्या करेगा? बैकलॉग बैकलॉग what प्रोडक्ट मैनेजर कर exactly लेगा. what exactly that product wants when किसी ने कुछ विजन दे दिया, स्टेक होल्डर्स ने बोल दिया यही यही बनाना है, but then what exactly we wanted to put into that product is the वो सोच के ही प्रोडक्ट मैनेजर वो वैल्यू ला आ, के देगा प्रोजेक्ट में, प्रोडक्ट में. कम कंपनी का विजन जो है उसको एग्जीक्यूट करना, ओके, जो यू आर, कंपनी का मतलब अगर मैं सारे आंसर्स में मानूं तो ये एक अलाइंड पॉइंट है जो कंपनी का विजन एग्जीक्यूट करना है. लेकिन व्हाट एल्स, वेयर डज द प्रोडक्ट, बिकॉज बिकॉज मैं अगर कंपनी का विजन सिर्फ लूँ ना तो सारे लोग वही कर रहे हैं. अगर तो ऐसे नहीं, देखो. हाँ. अगर विजन आपके पास है, विजन मिला आपको पहला, अब विजन को किस टाइम पे क्या क्या एग्जीक्यूट होना है, कौन सी चीज कब जानी है, आपको ये लेकिन पता है? वो तो बाकी लोग भी, वो तो सीईओ खुद कर लेगा ना. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अगर बोलूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का पर्पस है कि इंडिया के हर एक कॉर्नर में फाइनेंशियल सर्विस पहुंचा देना. ठीक है, विजन है, प्रॉपर विजन है. ठीक है. फाइनेंशियल सर्विसेज अब कैसे पहुंचाना है, या प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड सोचेगा कि भैया अब ये मुझे ये चीज सब जगह पहुंचाना है? अब भैया जो आईसीसी बंदे ने जो बोला वो हर जगह तो जाएगा नहीं बताने के लिए। अब वो बोलेगा भैया नीचे बताया है कि अब आपको बोला कि ये काम करना है, अब आप डिसाइड करोगे कि इसको कैसे लेके जाना है बस सब जगह पर। तो कोई अब या तो ठीक है, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट. आई वोंट आर्ग्यू बिकॉज इट्स अ फेयर पॉइंट, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग. मतलब probably if you think about it, matlab, okay, because of the lack of the time, probably I will tell you my perspective. And it may, again, I am saying in product management, it's more a mix of arts and science. So there is no right or wrong answer. But fundamentally, every day, I think about one thing, which is product manager is the representative of the customer to the company. So कंपनी का एक विजन है फाइनेंशियल सर्विसेज लेके जाना, बट कस्टमर को कौन सा फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको सेविंग्स अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चाहिए, कि सेविंग्स अकाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए एग्जैक्टली, वो प्रोडक्ट मैनेजर कस्टमर के बिहाफ से कंपनी को बताएगा. वो और कोई नहीं बता सकता. वो प्रोडक्ट मैनेजर दैट ब्रिंग्स दैट वैल्यू. इफ आई डोंट नो द कस्टमर बेटर देन एवरीवन एल्स, आई एम नॉट ए गुड प्रोडक्ट मैनेजर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ठीक है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली सेइंग दिस. ठीक है, मार्केट को क्या चाहिए वो प्रोडक्ट मैनेजर ही सेंस कर सकता है. ना तो सीईओ कर सकता है, ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है, ना तो डेवलपर कर सकता है, ना तो सेल्स पर्सन कर सकता है. यू माइट बी कॉन्टेक्टिंग विद द सेल्स पर्सन टू अंडरस्टैंड हिज व्यूज, बट व्हाट द मार्केट वांट्स ये सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजर को पता है. नहीं, ये कैसे आएगा? कैसे आएगा? आपको मार्केट में जाकर बात करना पड़ेगा कस्टमर से, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा. कैसे आएगा? वही तो आर्ट है दोस्त. अगर मेरे मेरे कंपनी में अगर लोगों को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए बेटर देन मी, देन दे आर बेटर बेटर देन मी इन द गेम. अगर मुझे आप बोलो कि फिनाग जो ऑफर कर सकती है सप्लाई चेन फाइनेंस, लोन्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें क्या ऑफर कर सकती है, दैट आई नो. बड़ी बात हो जाएगी थोड़ा, बट दैट आई नो 90% चांसेस दैट आई नो बेटर देन अदर पीपल. दैट्स व्हाई आई एम इन द प्रोडक्ट डोमेन. great, so great. Thank Many you people for you are taking not this. convinced. You people can counter argue, but Listen, नहीं, I वो but वो you are saying मार्केट में क्या चाहिए, तो वो तो मार्केटिंग टीम है, राइट? दे आर एनालाइजिंग दिस फैक्ट्स. दे विल ऑलवेज सी मार्केटिंग टीम कैसे काम करती है. आप किसी ऑर्ग में जाओ, जैसे जोमेटो में जाओ. ठीक है, जोमेटो क्या बोलेगी कि मार्केटिंग टीम क्या करेगी? एक तो जोमेटो का ब्रांड बिल्ड करेगी. ठीक है, विथ सर्टेन वैल्यू प्रोपोजिशन के बोलेगी कि ये दूसरे जगह पे नहीं है, ये इधर है, इसलिए ये बहुत बढ़िया है. जोमेटो को इस किसी इंडियन इमोशन या फिर किसी बिगर इमोशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी कि दिस त्योहार हम लोग लाए हैं आपके लिए, समथिंग लाइक दैट. उस इमोशन से कनेक्ट करेगी. मार्केटिंग पीपल आर पुशिंग द things which Zomato can offer you, मतलब which the company can offer you. Okay. They are pushing the things, they are creating it, they are presenting it to you in a more acceptable manner, right? आपको मैं आके बोलूंगा तो ज्ञान लगेगा, लेकिन वही मार्केटिंग के थ्रू दिखाया जाएगा तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा, राइट? मतलब एक एथलीट बोलेगा कि ये हेल्थ प्रोडक्ट है तो वो सुनने में और अच्छा लगेगा कंपेयर टू जस्ट टेलिंग थिंग्स. वो मार्केटिंग करेगा.
बट मार्केट को एग्जैक्टली क्या चाहिए? अगर हेल्दी स्नैकिंग, लेट्स फॉरगेट अबाउट द डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर कोई बोल रहा है कि इसमें से स्नैकिंग कंपनी है, लेकिन मार्केट कब क्विकली चेंज कर रहे हैं ना, हेल्दी स्नैकिंग में जा रहा है। आई विल गिव अ गुड एग्जांपल, आई डोंट नो इन दिस फोरम आई टुक दिस एग्जांपल और नॉट। जब जिलेट पहली बार इंडिया में आई थी ना, तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, रेजर, वो लोग जो ये करते हैं ना, वो चल नहीं रहा था मार्केट में। मतलब इंडिया ने पहले बहुत पिक किया, ठीक है, जिलेट इज अ वेरी बिग ब्रांड। और इंडिया में जैसा होता है ना कि बाहर का कोई ब्रांड आता है तो पहले लोग एकदम पागल हो जाता है कि अरे क्या आ गया भाई, बहुत मस्त है, ठीक है। तो उसने जिलेट सबने पहले खरीद लिया, फिर मार्केट सेल्स एकदम डिप कर गया, ठीक है। अब वो जो सेल्स डिप किया, क्यों किया और उसको कैसे एक्सेप्टेबल बनाना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक पर्सन चाहिए। और वो पर्सन मार्केटिंग नहीं हो सकता, वो पर्सन सेल्स पर्सन नहीं हो सकता, वो पर्सन सीईओ भी नहीं हो सकता। वो पर्सन है प्रोडक्ट का बंदा, जो कंपनी के सामने यूजर को रिप्रेजेंट करे। नाउ द फनी थिंग इज, यू नो व्हाई द सेल्स डिप्ड? मतलब एनीवन नोस द स्टोरी? देन आई विल नॉट रिपीट। मेरे को पूरा तो नहीं पता। मतलब जो पहले जो रेजर बेचते थे वो खाली रेजर के रेजर बेचते थे, वो कहते हैं हम रेजर, फिर उन्होंने रेजर को सस्ता सस्ता बेचना शुरू किया बाद में। ब्लेड रेजर हाँ स्टोरी, ठीक है, दैट्स अ हाँ। सेपरेट स्टोरी, बट ओके। दिस इज, मतलब दिस वाज आल्सो a ट्रू स्टोरी व्हिच आई विल probably will discuss in some other session, but this is not the story I was referring to। हुआ ऐसा था कि इंडिया में लोगों को आदत था ना कि एक मग लेके बैठ के हम्म वहां पे पानी में रेजर को धोने को। Hmm. आपने भी देखा होगा अपने पेरेंट्स में या किसी एल्डर पर्सन इन द फैमिली को, राइट। बट यूएस में क्या था, वो लोग रनिंग वाटर में, लाइक बेसिन में धोते थे। तो द रेजर वाज बिल्ट इन दैट वे कि वो धुलेगा जब अब रनिंग वाटर में धोओगे। बोथ आर रेजर्स, हम्म ठीक है। बट इंडियन पर्सन जब मग में लेके वो धोता था ना, वो रेजर, तो वो धुलता नहीं था हम्म। प्रॉपर, और उसका सेविंग प्रॉपरली नहीं होता था। कुड आई कन्वे यू द मैसेज? Yes, yes. ठीक है। तो द वे पर्सन इज यूजिंग द प्रोडक्ट नो इज वेरी डिफरेंट इन अक्रॉस जियोग्राफी, अक्रॉस सोशल स्ट्रेटा, अक्रॉस डिफरेंट दिस थिंग। सो आवर फंडामेंटल जॉब इज, अगर मैं डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट या एसोसिएट प्रोडक्ट बनूं या फिर कल सीपीओ बनूं, मेरा फंडामेंटल ये होना चाहिए कि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो यूजर यूज कैसे कर रहा है, वो कहाँ पे क्लिक कर रहा है, वो उसको कहाँ पे क्लिक करने का मन कर रहा है। अंडरस्टूड? कुड आई कन्वे? अंडरस्टूड द पॉइंट? Yeah. मेरे मेरे एप्लीकेशन में एक पैन से 8 जीएसटी आता है, मान लो एक पैन से मल्टीपल जीएसटी आता है। तो यूजर्स को ना, मतलब किसी एक जीएसटी का यूजर ने पासवर्ड देना होता है, जस्ट टेकिंग ए लाइव एग्जांपल, ठीक है। किसी एक और बाकी सब सप्रेस करना होता है। जिसका नहीं किया ना, सप्रेस भी नहीं किया और यूजर ने पासवर्ड भी नहीं दिया ना, तो वो एप्लीकेशन बाद में अटकेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा chaos क्रिएट हो गया था फॉर ए लार्ज एनबीएफसी इन फ्यू डेज बैक, which is our client. Because I know how the product functions or how the user uses it, I can always go back to them and tell them that this is what is happening actually. Otherwise, for to them, it's always 100 tickets, 80 not solved, 20 taking 3 hours time, etc. But wait to solve exactly, रावण के सर पे नहीं, मतलब किधर मारना है, वो प्रोडक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए, ठीक है। आई एम टेलिंग प्रॉब्ली बिग थिंग्स व्हिच यू विल रियलाइज प्रॉब्ली विद द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, अब वो जो सॉल्यूशन करना है ना, जो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन करना है, एआई इज जस्ट अनदर मीडियम फॉर दैट। टू मी एटलीस्ट दैट इज द वे। आप पहले फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे थे, एक गाड़ी में एक मस्त कुछ एक फंक्शन चाहिए, जिसको भी गाड़ी का शौक है उसको पता है कि गाड़ी इंप्रूव 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 होता रहा, फंक्शन चाहिए, वो गाड़ी का प्रोडक्ट मैनेजर था। जो डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जब आ गया, जब डिजिटली आ गया, तो डिजिटली ये हुआ कि डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में उसको टेक्नोलॉजिकली कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ कैन टेक सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज द क्वेश्चन हैपेंड अक्रॉस। नाउ हाउ एआई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, but fundamentally you have to solve the problem for particular customer problem or particular customer friction, which the customer may not be aware about also. One small thing, I will add one small thing. There is a very, very popular line by Henry Ford: customer will always want faster horse. ठीक है, बट यू हैज अ पर्सन नाउ टू अंडरस्टैंड कि भाई कार बनानी पड़ेगी। इस पे अच्छा सा ये है, सुपर पंप्ड बोल के एक सीरीज है जो उबर के फाउंडर का है। मतलब आई लव दैट सीरीज बिकॉज आई थिंक दैट फाउंडर वाज वेरी जीनियस। एक कैब सर्विस चलाना ना,
is like dying every day, some problem and everything. ठीक है, nonetheless, but yeah, I don't know how I could convey, but who asked this question? AI product manager, I think. Sir, I did, sir. I mean, you were superbly answering that question. Naveen, it will be great if you can also open the camera because after that, the people will post. Ideally you should post about it. So Naveen, did it No, answer your question? Like, do you understand this, or is it aligned with you? What you wanted to ask? absolutely, sir. Sir, absolutely. I was able to comprehend your answer, but I still have that instigative question in me that, sir, I mean, there's a lot of, say, automation is another wing altogether, right? So we shouldn't, what was the mistaken automation to AI product manager, because automation was always there, but now I think it's getting easier with AI. I don't know. I want to know your thoughts on this. And product is something very distinct with respect to automation, or there are a lot of roles coming in, sir. But the bottom line says, Tender, you're a representative of the user and you're trying to solve a problem with user sides or doesn't side is what it remains. So this is what I might take away from your immediate answers, your thoughts. So यूजर का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, आप कैसे सॉल्व करो ना, दैट दोज ऑल आर बैक एंड. आपको जोमेटो जब यूज करते हो ना, वो फ्रंट एंड में आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए. बैक एंड में क्या हो रहा है ना, कितना लंबा कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर वो आपको समझ में आने लग गया तो आप बोर हो जाओगे, आप यूज ही नहीं करोगे. तो बैक एंड में आपको एआई यूज करना है सजेस्ट करने के लिए कुछ मस्त अच्छा खासा. ये हर डिकेड और 2 डिकेड्स में एक नया नया चीजें आती है, और इट इम्प्रूव्स द थिंग्स. इट एक्चुअली इज वैल्यूएबल एंड इम्प्रूव्स द थिंग. 80s में प्रॉब्ली कंप्यूटर आया, उससे पहले ही आया, लेट्स से मार्केट पब्लिक मार्केट में आ गया. 2000s में लेट्स से इंटरनेट आया, अभी एआई आया है. आज से 5 साल पहले ना वेब 3 लेके मार्केट ऐसे बूम में था कि वेब 3 विल मैनेज एवरीथिंग. इट डज इट मीन कि वेब 3 उतना उतना पिक नहीं किया? डज इट मीन कि वेब 3 इज नॉट यूजफुल? इट्स वेरी यूजफुल. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो वेब 3, but Web3 is very useful. But the point is, it's not the right time to use Web3 to solve normal problems. AI has reached that stage जहां पे AI यूज करके मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत But सारे but चीजें हैं और इजीली कर सकता हूँ. हाँ. so do you see it as a bubble, sir, or do you say it's here to stay? Bubble in what sense? Like, what do you call as a bubble? So a bubble is like it has very limited period of time and then it just vapors up. Like it exists in a fashion where you question yourself it ever did exist. So that's called as bubble, where the peak goes at too high and then it comes down at a very rapid pace at the same rate at which it went high. So I'll tell you, bubble word was made famous in during the 2000 when the this thing .com bubble टर्म यूज किया जाता है कि .com में तब इतना सब लोग .com बबल ये यूज कर रहे थे. सो हुआ ऐसा था ना कि 1997 से 2000 तक अगर आप देखोगे तो यूएस में ऐसा ऐसा क्रेज आ गया था कि डॉक्टर अपना डॉक्टरी छोड़ के, विच इज अ वेरी हाई पेइंग प्रोफेशन, राइट, डॉक्टर अपना डॉक्टरी छोड़ के अपना समथिंग.com खोल के बेचना शुरू कर रहा था. समथिंग.com यू हैव टू ओपन टू रेज मनी, and you are raising money like anything without any use case, without any solving customer problem. That become a bubble. But जब तक आपका वो fundamentally connected है, this same question was asked to Jeff Bezos once in one of the, I think David Millerman या some interview में. तो he mentioned this thing कि मेरा अगर valuation छोड़ दूं तो बाकी सारे metric में मेरा Amazon बाकी सारे metric के KPI में Amazon was doing good. Number of deliveries I was doing good. Number of regions I get the orders from is doing good. Number of the frequency at which I was getting the order, it was increasing. It was getting better. So everything was different. It's just that कि उस समय पे लोग पहले पैसा बहुत डाल रहे थे इन्वेस्टर्स .com में, तो बहुत सारे कंपनीज जिसका कोई यूज केस ही नहीं था उसको भी पैसा मिल रहा था. एंड सडनली व्हाट हैपेंस के मनी ड्राइज अप एंड देन वो होता है ना एक, क्या बोलूं, मतलब वो नेटवर्किंग जो क्या बोलते हैं उसको, एक एक लोग 3 लोगों को जोड़ता है, 3 लोग 9 लोगों को जोड़ता है. Networking, Marketing. networking, हाँ, पिरामिड टाइप नेटवर्किंग मुझे पता है. network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग, करेक्ट. सो वो ऐसा टाइप, तो अचानक एक इंसान क्या देखेगा, एक कॉलेज में एक ने शुरू किया तो उसको 1000 लोग दिख रहे हैं, तो उसने 3 लोग किया, 3 लोगों ने 10 लोगों को किया, 10 लोगों ने 30 लोगों को किया, फिर उसके बाद लोग नहीं है. तो जब इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है ना कि एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, दूसरे ने बेचा, तीसरे ने खरीदा, फिर अचानक देख रहे हैं कोई खरीदने का है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट गिर जाता है.
लेकिन क्या .com ने एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व किया था? डेफिनेटली किया था. सो सिमिलरली इन एआई ऑल्सो आई फील, एंड दिस एन ओपिनियन, द लास्ट पार्ट व्हेन आई एम ट्राइंग टू से, एआई में भी पैसा बहुत आ चुका है. क्या वही कंपनीज ग्रो करेगी जिन कंपनी ने अभी तक फंड रेज किया है? आई एम नॉट श्योर. इवन इफ यू, कोल्ड फ्यूजन बोल के एक चैनल है, मैक्रो इकोनॉमी अगर पसंद है तो यू कैन फॉलो दैट चैनल, यूट्यूब चैनल, कोल्ड फ्यूजन बोल के. तो उसमें वही दिखा रहा था कि हाउ चैट जीपीटी इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ in terms of, because Gemini but has grown the market in such a manner that now it is getting into everything and ChatGPT is struggling. क्या ChatGPT सक्सेसफुल बनेगा? आई डोंट नो. सो दैट्स अ बबल, यस. बट right क्या now, एआई सक्सेसफुल बनेगा? आई एम 200% श्योर इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज देयर आर मेनी यूज केसेस व्हिच इज द एक्चुअल प्रॉब्लम द पीपल आर सॉल्विंग यूजिंग एआई. Right, sir. The last bottom line question, it might sound a bit childish, but still, sir, will product manager stay? Will product manager as a role, I mean, stay back with this, no, what do I say? Invasion of AI. So you tell me, if you want to build a digital product, if the product manager role doesn't exist, so let's say, forget about everything. Let's say, take any large or small organization. Okay, I want to grow. Okay, and I want to build, let's say, a traveling app. Okay, I want to get into the traveling business, and traveling app I want to launch. Okay, what do I need fundamentally? One, I need salespeople to actually go and sell it to some B2B sales, some customer sales, etc. One, I need developers to code it. But who will tell the developer what to code, what to build exactly? BA, How does it look? BA can tell. Okay, what is the fundamental difference between a BA and so all the roles we discussed, like project manager, sales, etc. What is the fundamental difference between a BA and a product manager? BA is like a person who take the requirements. Who gives the requirement? Like he can take the directly from CEO also requirements, or from the product manager or a PO, and he writes the use stories, understand, and but when the BA directly talk with the COA, so he need to understand more deeply what is the exact. He has to think like a product manager. So because now the product manager is becoming a three roles involved over there. The product manager role, PO, and the BA role are involved in one. As when the BA plays that role. सो देखो, अभी क्या है कि स्टार्टअप में लोग नहीं रहने से कोई भी कोई कुछ रोल पिक कर सकता है. दैट्स नॉट ए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. बट फंडामेंटली यू सेड इट वेरी राइट. बीए का काम होता है किसी एक पर्सन से रिक्वायरमेंट गैदर करके वाई पर्सन को कन्वे करना या उसके यूजर स्टोरीज बनाना. ठीक है, इट्स द दैट लिमिटेड. ठीक है. प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है एक वेग से सेंटेंस को ये करके पूरा एक प्रोडक्ट बिल्ड करना. सो ट्रैवलिंग का गैप अगर मुझे बिल्ड करना है, will I be only getting into ticket bookings, or I'll be get into stayings? If I ticket bookings, will I get into flights, trains, buses, etc.? If I get into all these things, if I get into flight booking, will I get into partnerships, or only I will get into direct partnership with, let's say, I will go through GoIBibo, or I will directly partner with Indigo, Akasha, and everything. If I'm getting into all this, do I have the data? Do I have the market understanding for this? Entire this analysis will the product manager do. बीए को जितना बोल दिया जाए, वो तो ही करता है. हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द रोल. अब बीए अगर उससे ज्यादा करने लग गया तो वेल एंड गुड, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू ग्रो, ट्राइंग टू लर्न मोर थिंग्स. That's why I told that na, that's why the BA working on like thinking like a product manager. Yes. And I'll tell you very honestly, sometimes as a product manager, na, I sometimes actually honestly sit with the coders and try to analyze the backend code. Okay, that doesn't mean that I will become the coder. It's not that, like it's not like that. It's just that I'm trying to learn that एक practical logic मैंने बताया, उस logic को ये लोग code में कैसे implement कर रहा है, मैं सीखने का कोशिश है, nothing else. Sorry. Logic अपने बना लिया, One logic को. last question in continuation with Navin's question. I don't know, it's kind of fear factor, and I discussed with this Gaurav also. Like, will AI replace PO and PM ka job or the entire role? No, I don't see that opinion, but I don't see that happening, because fundamentally for me till today
AI knows to do things very what I should say very directly और very मतलब मुझे अगर एक वेबसाइट बनाना है आज से 20 साल पहले it used to be like a whole lot of things to do. Then there become many sites के मेरे को आप कस्टमाइजेशन बता दो मैं वेबसाइट बना के दे दूंगा. आज क्या है इट्स प्रॉम्प्ट्स. तो ये डायरेक्टली लेकिन वेबसाइट क्या बनाना है और क्यों बनाना है वो तो प्रोडक्ट मैनेजर को ही बताना पड़ेगा ना. वो कैसे बताएगा दूसरा. This AI can't take the decisions on that. Yes, AI can't take a decision and मीन्स मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ मतलब अल्टीमेट वो क्या बोलते थे ना कस्टमर भगवान है. ठीक है. तो भगवान की जो ख्वाहिश है ना वो प्रोडक्ट में हम लोग वो दूत है जो भगवान की ख्वाहिश आके ठीक है. दैट इज व्हाट आई फील. ठीक है. वो और बिलीव मी बी ऑलवेज क्लोजर टू द फंडामेंटल्स. ठीक है. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली the more you grow in the organization ना the higher chances that you will get lose control over your fundamentals. ठीक है. बट ऑलवेज मेरे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा मैंने सीईओ सीपीओ सबको करते हुए देखा सीटीओ को भी कि वो लोग डायरेक्टली जाके यूजर से बात करते हैं कि कैसे यूज करते हो दिखाओ एक बार. ये कैसे करते हो वो कैसे करते हो. ठीक है. ये कैसे समझ में आया तुमको कि ये करना है. ठीक है. ये अगर नहीं करोगे ना जिस दिन उस दिन तुमको नीचे वाला कोई इंसान सॉरी फॉर यूजिंग दिस सच काइंड ऑफ वर्ड्स बट चुतिया बना के चला जाएगा. तुमको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में. ठीक है. तुमको लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है ना कुछ हवा तक नहीं दिख. वो जो व्हाट्सएप का वो समझ प्रोडक्ट में नहीं मैनेजर है ना आएगा. उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या हम लोग कैसे टाइप कर रहे हैं कहाँ पे उंगली जा रहा है व्हेन टू चेंज इट इमोजी व्हेन टू डू दिस थिंग. ही नोज एग्जैक्टली दिस थिंग. I will add one point that product managers will be replaced by AI or not. Uh, I will tell you my own perspective because a lot of people from US and Europe also reach out to me. What is the मतलब what change I'm noticing there? I'll be very honest with you. मतलब if you see 1 year back, everyone was मतलब product management was very non-tech role. If you see all the content or every single thing which was not technical. When I left my job, so I understand I also don't come from very technical background. मतलब I was electrical engineer. Later on मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा वो तब वहीं से सीखा. But I will tell you what I feel and which is happening as well. Product managers will become more technical. They will understand how development works. I'm not saying they will be doing the coding, but I'm saying कि ऊपर से how the code works will become the mandatory stuff. ठीक. This will be the how markets are going to evolve. और ये हो रहा है. यह हो चुका है. ठीक है. And I will say very frank about it. If you see there are two, if you just you can do it Google as well. APM as a role has shrunk a lot. PM interns company higher than converted to a PPM or company directly hire APM. Oh, sorry, PM. These are the things which I have seen here now markets are built. Or there is some project you can do it, then after the project you can enter into product manager. It's very easy. Preetham, if you remember, I will tell you, Preetham has actually mentioned this thing to me once. Ki, yaar, Gaurav, I have one hiring for a product analyst, maybe one or two, and two hiring for product analyst, two for intern as well, I think. There is actually there. I will tell you, there is I think two for product intern. Na? There is ठीक है. one तो girl. मैंने मतलब प्रोडक्ट मैनेजर हायर किए और एक मुझे लाइव प्रोजेक्ट के लिए एक चाहिए था. ठीक है. तो या एनीवन कुड फ्रॉम फॉर द I will लाइव tell प्रोजेक्ट you पीबीसी में टुडे. one very interesting thing. There's one girl he selected from IM Indore. She was यस. working bank for that intern. Just think here, those people are willing to learn. And I will why I mention this thing, a lot of people are not willing to do some kind of projects. That is that is the one of the reason I'm telling you this case. Okay, be open, but if you do one project, doors are open for you.
How to get the project? आते हैं, बस आपको थोड़ा आँख कान खुला रखना पड़ेगा। देखो, ये एक मैं साइट भेज रहा हूँ। ये दिस वाज द साइट फॉर विच आई वाज हायरिंग और लुकिंग फॉर समवन हु कैन कंट्रीब्यूट हियर। वेट, आई डोंट हैव एक्सेस टू सेंड मीटिंग, ये क्या? msmetoday.org. So the idea was कि अभी MSMEs को क्या किया जाता है ना, MSMEs is like the very shortly saying, MSMEs are called the backbone of India. Just 30% of the GDP are controlled by MSMEs, the small and medium enterprises. तो हम लोग उसको लोन देने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो इतना स्कीम्स लॉन्च करती है ना, उसको कभी पता नहीं चलता। सो वन ऑफ आवर आइडिया वाज कि उसके लिए हम लोग एक अलग प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं जहां पे उसको स्कीम्स के बारे में सिर्फ बताएंगे, नो लोन्स, नथिंग, उसका कोई कमर्शियल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्कीम्स के बारे में बताएंगे। एंड msmetoday.org जो भी बनाया है अभी तक, इट्स वेरी प्राइमरी स्टेज, बट जो भी बनाया है अभी तक एक भी कोडिंग नहीं किया हम लोगों ने। अगेन कस्टमर प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट, इट्स अगर कोडिंग से करना है तो डेवलपर्स लगेंगे, एआई से करना है तो someone with AI will solve this, AI knowledge, etc. But we didn't code for this. By the way, at that moment now we were discussing here, can we create this website using Lovable? हाँ, yes. ठीक। Okay, if anyone else has any questions, I'm happy to answer, or we can wrap it up. Anyone have any question, by the way? With that, I think India is also winning, very close to winning. I will say one thing to you guys. Okay. Naveen, you are there, by the way? Pritam, India won. Yeah. Hi. It was crackers were, I was getting the sounds of crackers, and just now I saw this India's one. So nice. देखो, I will tell you one thing. Naveen is one of those people who joined us in last, I think June or July. I do not remember. But now, देखो, I will tell you one thing which I certainly learned over the time period. Okay. I take one mock interview of every single person who joined. Okay. And we always give the scores as well कि यार we ask a lot of question कि यार what you have learned, जो भी हम पढ़ाते हैं we generally ask from that, क्योंकि at the end of the day the name of the product is AI product management blueprint. So it's more toward AI and technology. I will tell you one thing which I Naveen का जो interview गया था, it was not really good. ठीक। But this guy also not attending a lot of classes, very honestly speaking. But this guy later on, एक होता है ना कई बार जब सर पे तलवार आके लटकती है तो people go and study. He has studied a lot. Now the when he was communicating with Preetham, na, at that moment I see, yes, his communication skills have improved dramatically now. What I feel now, okay? मतलब it's like he improved himself. He worked literally hard, and by the way, he get really crazy hike. Okay? I also learned some math. Naveen, Naveen. I would want you to not say that. Thank you, Sarah. I mean, But please. those secrets na between you and me will be always there. I will not going to share with anyone. Okay? Okay. Tech. So this is the thing. By the way, I just want to ask. I think one of the best sessions which we have taken is the tech sessions, according to you. Yes, I mean, I would say I would underline the answer why. So Hmm. basically, the people who took sections were very, what I say, technically proficient and technically inclined in their role, which is basically the underlining implicit character. So which that helped a lot to understand. So they were confident enough in delivering lectures, and moreover, the other side of the audience, like me, so kind of intrigued by their oration skills and all of that. So
that helped. Basically, the faculty and the knowledge help definitely. I would say from my perspective. ठीक है, great यार. So guys, anyone have any question to ask? Naveen, Ankur, Pritam. By the way, na, I will say one thing. Actually, I will take a screenshot of it. Okay, I will post it Sure. on LinkedIn. So can you just speak so that you can come over the screen and I can take a screenshot and be prepared for a screenshot as well. Okay, guys. Really, except Pritam, no one is going to speak. So I don't know what to say more, but it was a good session. So more I interact now, more I get to understand different perspectives, and it's not only the users. It's sometimes who are not the actual users, they also come up with some perspectives which give me a good gyan on product management, and I am really into still. In product management, every day is my day zero, to be very honest. Okay. I always go to the office and try to understand what has happened new and try to solve a problem. Okay. So that is been the message. And connect with me if anyone has any doubts. Happy to clear. You are coming via Gaurav. Gaurav has helped me a lot in understanding many other things. So yeah, that would be very good luck for you. Guys, I'm just taking the screenshot. Okay, Pritam. So you can. Not done. नहीं नहीं बी sit in मतलब बी मतलब बिल्कुल सीधे रहो because ना screenshot will it will not give a really good impression. Yeah, ठीक है. Now I will just take one another screenshot. ठीक है. So guys, ठीक है. I will post this thing over LinkedIn. I will say one thing. If you want the screenshots, I will give you the screenshots. ठीक है. And you can also tag him. ठीक. And I will tell you very honest. जो भी तुमने सीखा है, just create it. I will tell you one thing. I will tell you every single week I'm getting 1 lakh more, approximately a lakh views. Take it, 1 lakh people are seeing me on internet. If you just tag it, it will automatically help you to get more reach. Add Preetham. I will tell you once I've also posted a post one couple of weeks back when I visited Preetham's office, FinAGG office. So after that, a lot of FinAGG people started seeing my content. That also happens. Check. That's how internet works. Okay. And at the end of the day, if you build your personal brand, it is really valuable. I will tell you one thing. I will tell you my hack to top 20%. I just go open my dashboard. Okay, I will tell you one thing. Preetham, there is a colleague of Preetham is Ravi. Ravi has raised funds from Y Combinator. Y Combinator से पैसा उठाना मतलब it's like dream of lot of entrepreneurs. ठीक है. When I reach out to him, he said कि Gaurav, I'm also getting views around 1 or 2 lakh views. I also received. So I just shown my dashboard. I've shown it tomorrow 50 lakh views. So it automatically people will love to learn. Okay, and very honestly, I always when I meet smart people, I just say I will help you building our personal brand. At the end of the day, it's a at least 6 month journey. Okay, 6 months you will see nothing. After that, something will happen. So that's how things look like. So I will provide you the screenshot. अभी नहीं तो मैं भी 2 मिनट में बस I will written it and I will just post it on internet. You can save it from there as well. ठीक. नहीं तो ग्रुप में तो भेज ही दूंगा. ठीक है guys. Done है? Anyone have any questions? I have one last question to Pritham. Pritham, I'm completely from a technical background. I do not have any insight on what is product management. I've been recently moved to a role of product owner, but it is quite different from the one which I have worked in the firm to the outside world. So, what do you think, like, from where it should be started? Like, should I go through like PO and then, or can I go ahead and practice directly into the product management? I would suggest there are few YouTube videos. Forgot one of the channels I would have suggested. Forgot the name, but the learning the product management is matter of thinking process also. PO is
Okay, fine. But what I fundamentally to me till date it is representing the customer, aligned with the what the company has to offer, right? Mhm. Now, while product owner does certain set of things, product management role is little more vast, or in terms of scope is little higher, right? So in that sense, I was also an engineer earlier, right? So I was working in CRM domain. So when I started thinking like a product manager, I didn't become a product manager till that time. I started thinking that whatever I'm building, how it is helping the user to navigate from one thing to another. So that thinking process you try to build, and also keep watching the YouTube videos where certain best will be you search with product management interviews in some FANG companies like Facebook, Amazon, Okay. whatever FANG companies are, right? FANG, Okay. or now it is called MANG, so MANG companies. Sure. Thank you. Yeah. Okay. So, guys, I will say you can